नमस्कार दोस्तों, दास कंप्यूटर में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो का माध्यम से जानकारी मिलेगा जो सैमसंग का एक्सप्रेस m2876 प्रिंटर, उस प्रिंटर के बारे में। इस प्रिंटर को ऑन करने के बाद जैसे ही प्रिंट देते हैं तो इस प्रिंटर में एक एरर कोड आ रहा है, जो एरर कोड है u2-1112। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। तो वीडियो स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आगे पाने के लिए। तो प्रिंटर को पहले हम लोग ऑफ कर लेंगे, उसके बाद प्रिंटर का जो चारों तरह का कवर है उन कवर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद ऊपर हिस्सा स्कैनर को भी अलग कर लेंगे। उसके बाद में जो प्रिंटर का जो लेजर यूनिट पहले उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रिंटर का जो लेजर यूनिट उसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग प्रिंटर का जो मेन पीसीबी है उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
लेजर यूनिट चेंज करने के बाद भी नहीं हुआ, तो इस बार हम लोग जो प्रिंटर का मेन पीसीबी है इसको भी एक बार चेंज करके देख लेंगे। ये जो मेन पीसीबी है यही बोर्ड चेंज करके देख लेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। प्रिंटर का मेन पीसीबी चेंज करके प्रिंटर बिल्कुल ओके है।